हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपैलिटीज एंड 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर के बाद आपको म्यूनिसिपैलिटीज कब आईं, उनके टाइप्स, आर्टिकल्स और मेमोरी ट्रिक्स सब परमानेंटली याद हो जाएंगे। वन अर्बन लोकल गवर्नमेंट यूएलजी सबसे पहले समझते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट का मतलब है अर्बन एरियाज में लोकल लेवल पर गवर्नेंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सिंपल लैंग्वेज में गांवों के लिए पंचायती राज और शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, effective from 1st June 1993. Added Part 9, A Articles 243p to 243zg. Added 12th Schedule, 18 functions. 2. Types of urban local bodies, 8. Municipal corporation, municipality notified. Area committee, town area committee, cantonment board, township board trust, special purpose agency, 3 evolution of urban local bodies. अब थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। 1688 इंडिया का फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में एस्टैब्लिश हुआ। 1726 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, कैलकाटा। 1870 लॉर्ड मेयो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुई। 1882 लॉर्ड रिपन इसको कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और उनकी रेजोल्यूशन को कहा जाता है Magna Carta of Local Self-Government, 1907 Royal Commission on Decentralization, 1919 Act, Local Self-Government Indian Ministers को ट्रांसफर हुआ। 1924 Cantonments, Act 1935, Act Local Government Provincial Subject Ban गाया। 4. Constitutionalization, अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 3 गवर्नमेंट्स ने एफर्ट्स किए। राजीव गांधी गवर्नमेंट 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989 लोकसभा से पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया। वीपी सिंह गवर्नमेंट रिवाइज्ड नगरपालिका बिल लाया गया, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व होने के कारण से हो गया। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट फाइनली बिल पास हुआ और बना 74th Constitutional Amendment Act 1992, effective June 1st 1993. 5. 3 types of municipalities. Governor area classify करता है based on population density, revenue, non-agricultural employment, economic importance. Types 1. Nagar Panchayat for transitional areas, यानी विलेज से सिटी बनने वाले एरियाज। 2. म्यूनिसिपैलिटी स्लैश म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज। 3. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरियाज। 6. कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। एरिया को डिवाइड किया जाता है। वार्ड्स रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, experts without voting rights, ward committee chairpersons. 7. Ward committees. Ward committees mandatory हैं, population 3 लाख या उससे ज़्यादा हो। इनकी composition और powers state legislators decide करती है। 8. Reservation. Reservation available for scheduled castes, scheduled tribes, women, minimum 1/3 seats. चेयरपर्सन पोस्ट्स में भी रिजर्वेशन होता है। 9. ड्यूरेशन म्यूनिसिपैलिटी का टेन्योर 5 years। इंपॉर्टेंट, अगर म्यूनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो जाए तो इलेक्शन विद इन 6 months और ये बचे हुए टर्म कर लिए ही कंटिन्यू रहेगी। 10. डिस्क्वालिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। मिनिमम एज 21 years 11। State Election Commission responsible for preparation of electoral rolls, conduct of municipal elections. 12.
Powers and functions. Municipalities का main objective: economic development, social justice, implementation of schemes. 12th schedule के 18 functions. 13. Finance of municipalities. Sources: taxes, duties, tolls, fees, grants and aid, state funds. Loans. 14. State Finance Commission. Constituted every 5 years. Functions: distribution of taxes, grants recommendation, review, financial position. 15. Audit. State legislature provides for maintenance of accounts, audit of municipalities. 16. District Planning Committee, 243ZD. Functions: consolidate district plans, prepare development plans, coordinate panchayats and municipalities. 17. Metropolitan Planning Committee, 243ZE. For metropolitan areas. Population: 10 lakh or more. Functions: Metropolitan Development Plan, coordination among municipalities. 18. Areas where 74th Amendment does not apply. Scheduled areas, tribal areas, certain special regions. 19. 12th schedule, 18 functions, includes urban planning, land use regulation, economic and social planning, roads and bridges, water supply, public health and sanitation, fire services, urban forestry, protection of weaker sections, slum improvement, poverty alleviation, urban amenities, cultural promotion, burial grounds, cattle ponds, birth and death registration, street lighting, parking and bus stops, etc. Slaughterhouses regulation, 20 municipal corporation authorities, council standing. Committees: Municipal Commissioner. Municipal Commissioner, Chief Executive Officer, appointed by state government. Usually IAS officer, mayor, political head. Presides over meetings. 21. Municipality authorities. Council standing committees. Chief Executive Officer. 22. Notified Area Committee, created by state government. For rapidly developing towns. Mostly nominated body. 23. Town Area Committee. For small towns. Semi-municipal authority. Created by state legislature. 24. Cantonment Board. Established under Cantonments Act, 2006. Under Ministry of Defense, total 62. Cantonment Boards, categories: 1. Above 50,000, 2. 10,000 to 50,000, 3. 2,500 to 10,004. Below 2,500, 25 township. Established by public sector undertakings. Managed by enterprise-appointed administrator. No elected body. 26. Port Trust functions. Manage ports, protect ports. Civic amenities. Examples: Mumbai, Kolkata, Chennai. 27. Special purpose agencies. Examples: development authorities, water supply boards, housing boards, pollution control boards, electricity boards, transport boards. 28. Municipal personnel systems. 3 systems: separate personnel system, unified personnel system, integrated personnel system. 29. Municipal revenue sources. Tax revenue, non-tax revenue. Grants, state devolution loans. 30. Central Council of Local Government. Established 1954. Under Article 263. Chairman, Union Minister for Housing and Urban Affairs. Functions: recommend policies, suggest legislation, center-state coordination, financial assistance, review local bodies. 31. Article-wise memory trick. P. Pechan. Definitions. 243. P. Definitions. Q. Qualify municipality. 243. Q. Constitution of municipalities. R. Representatives. 243. R. Composition. S. Subcommittees. 243. S. Ward committees. T. Ticket reserved. 243. T. Reservation U. Until 5 years. 243. U. Duration V. Valid candidate.
243. V. Disqualification. W. Work 243. W. Powers and functions. X. Extra money. 243. X. Municipal taxes. Y. Yearly finance. 243Y. Finance Commission. Z. Zero error. 243Z. Audit Z. A. Authority of elections. 243ZA. Elections. ZB. Bodies in UT. 243ZB. Union territories. ZC. Certain areas. 243ZC. Exempted areas. ZD. District 243ZD. District Planning Committee. ZE. Metro 243ZE. Metropolitan Planning Committee ZF. Former laws continue. 243 ZF to existing laws. ZG to gavel, gone. 243 ZG to bar to court. Interference in elections, exam. Fact 74th Amendment to 1992. Effective to June 1st, 1993. Part 9, A to Articles. 243P to 243 ZG. 12th Schedule, 18 functions. Father of local self-government, Lord Ripon Municipality term. 5 years State Finance Commission, every 5 years. Minimum age, 21 years. लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।